Good morning, friends. My name is Avinash Ghorpade, and today we are going to learn about interview questions. Okay, interview questions asked in communication, section for 12th standard. So interview question is quite easy actually. Easy in the sense you no need to write answers of the questions. You need to simply frame 8 to 10 questions. So I am going to explain you, by using very lucid or easy method, how to write 8 to 10 interview question for any question. I am going to give you 8 questions, which questions you can write to any questions. Whether you are going to conduct an interview for sportsman, doctor, engineer, farmer, dietitian or sarpanch or any teacher actually. So you need to write the same questions for that. See, I have already mentioned here marking scheme for interview question. Relevant question to situation. तो जो सिचुएशन है उसके ऊपर अगर आप रेलेवेंट क्वेश्चंस लिखते हो तो उसके लिए 2 मार्क्स है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ doctor, so you need to ask questions regarding doctor profession or medical profession. Okay, you cannot ask very general questions to them. अगर relevant questions है तो you will get 2 marks. Then proper sequence. There is a certain sequence of questions. Initial questions, middle questions that you need to ask, and closing questions. Okay, this is the pattern for interview questions. So this is for 1 marks. Then accuracy of language, the kind of language you are using, that language has also important. So okay, it has 1 mark. So overall it has 4 marks. Okay, this is marking scheme. Coming to the point, my question, see the question. Imagine you are supposed to interview what? Interview a famous sportsman. See, if I replace these words with doctor, it's okay. An engineer, it's okay. Actor or actress, okay. You may take farmer also, teacher, dietitian, and so on. So there are numerous characters: politician, artist, anybody you can इंटरव्यू. तो आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हो यहाँ, ऑफ योर चॉइस. फ्रेम अ सेट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस. 8 से 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं. आई हैव ऑलरेडी रिटन 8 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हाउ कैन वी राइट क्वेश्चंस. what is the interesting thing of interview question? You need to simply frame a set of questions. No need to write answers of the questions. Asking question is easy task than answering the question. Okay, so you can take a screenshot of this. I'll explain you. Okay, taking an interview is an amazing experience actually. You might have experience in your life. If not, let's see. There are certain pattern to ask questions. You may notice numerous interviews on the television set. I have written here few examples. Let us start. What happens most of time, student ask straightforward direct question to him or her, that concerned person. But before asking question, you need to settle down actually. Okay, so there are certain formalities that we need to take, we need to do, like good morning sir or ma'am, oblique you can say. Then the second sentence is welcome in this interview session. This is very common and easy sentences frame I have written over here. The same thing you need to repeat. यही चीज़ें आपको वहाँ लिखना है इंटरव्यू क्वेश्चन में. And then you need to start the interview. See the first क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होता है. जनरली बैकग्राउंड पे पूछा जाता है, एजुकेशन पे पूछा जाता है, ये सब चीज़ें जो जनरल चीज़ें हैं. टेल अस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग. तो आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में एंड आपके अपब्रिंगिंग के बारे में पूछ रहे हो कि आप हमें बताइए. तो ये कॉमन रहेगा. बहुत बार लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, आपको ये चीज़ें याद आएंगी.
This is the first question common to all, whether doctor, engineer, actor, actress, politician, artist, sportsman, कोई भी हो, सबके लिए यही क्वेश्चन रहेगा. Now coming to the second question, I have written you a few questions which are very common. You can ask this question to anybody and these questions are relevant to anyone. किसी के लिए भी relevant है. How did you get inspired to become? आप किस तरह से इंस्पायर हुए हो, किस चीज के लिए इंस्पायर हुए? टू बिकम, बनने के लिए. क्या बनने के लिए? टू बिकम. अगर मैं स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू ले रहा हूं तो यहां लिख लीजिए स्पोर्ट्समैन. मैं अगर डॉक्टर का ले रहा हूं तो बिकम अ डॉक्टर. मैं इंजीनियर ले रहा हूं तो बिकम एन इंजीनियर. मैं टीचर का ले रहा हूं तो अ टीचर. मैं एक्टर एक्ट्रेस का ले रहा हूं तो वो यहां लिख लीजिए. तो ये जो मैंने यहां फिल इन द ब्लैंक छोड़ा है, ये कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, वो यहां लिख लीजिए. This is my second question. So easy. Write it down. Then, who is your ideal person? तो आपका ideal person कौन है? There are so many persons who influence our life, throughout our life. Like our mummy, papa. Okay, they are most ideal person for us. तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं. Who is your ideal person? जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया है, मोटिवेट किया है, उसका नाम आप यह लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म करना, आपको आंसर नहीं लिखना है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? सी, दिस इज सो सिंपल क्वेश्चंस दैट एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज देयर ओन हिस्ट्री. ओके, सबकी एक हिस्ट्री होती है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी पता होनी चाहिए कि अगर सचिन तेंदुलकर कुछ बना है तो वो कैसे बना है, क्या स्ट्रेंथ थी उसकी, वीकनेस भी पता होना चाहिए हमें. तो वही चीज़ें हम इसको पूछ रहे हैं वेरी कॉमनली. स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है? दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क टू एनीबडी. व्हाट इज योर चाइल्डहुड ड्रीम? अब देखो, इसमें से कोई भी हो तो ये किसी का भी चाइल्डहुड ड्रीम तो होता ही है, तो आप ये कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हो, सो दैट वी कम टू नो सो मेनी थिंग्स ऑफ हिज और हर लाइफ. तो चाइल्डहुड ड्रीम पूछ सकते हैं आप. ये नंबर 5 पोजीशन पे मैंने रखा हुआ है क्वेश्चन. देन, व्हाट मेक्स यू स्पेशल फ्रॉम अदर्स? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ कॉमन पर्सन, जो कॉमन फीचर्स लेके आते हैं, तो वो कुछ स्पेशल ही होता है. तो इसलिए उसको क्वेश्चन से, व्हाट मेक्स यू स्पेशल फ्रॉम अदर्स, दूसरों से आप अलग कैसे हो, तो उसके आंसर्स वो दे सकते हैं. और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देन मैं 7th पोजीशन पे एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? सी, तो वेन एवर वी आर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू ऑफ समबडी, तो उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं. लेट मी टॉक अबाउट स्पोर्ट्समैन, तो शायद वो आगे जाके कोच बनेगा या फिर उसकी स्पोर्ट अकेडमी होगी, या लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर ले सकते हैं, तो उनका कुछ अलग प्लान होगा, स्पोर्ट्समैन का है, या फार्मर्स का भी हो सकता है, इंजीनियर्स के. तो इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लाइफ में, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो, तो उनके लिए कॉमन सा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं 7th नंबर के पोजीशन पे. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड आल्सो इजी. कंक्लूडिंग क्वेश्चन वी कैन से दैट इट हैज 8th पोजीशन, ये 8वें नंबर पे मैंने रखा हुआ है. क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है. गिव अ मैसेज टू अपकमिंग. तो अपकमिंग ये कौन है? डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, फार्मर्स है, क्या है ये? एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, टीचर्स है. यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन का इंटरव्यू ले रहे हो वही यहाँ लिखना है, वही लिखना है यहाँ. जैसे स्पोर्ट्समैन का लिख रहे हो तो अपकमिंग स्पोर्ट्समैन आप यहाँ लिख सकते हो. तो उनके पास कुछ मैसेज होता है, because they have been working in their field since so many years, or for so many years actually, for so many years. तो उनके पास वो एक तजुर्बा या एक्सपीरियंस आ जाता है, तो he or she can address to the upcoming generation. तो this is the last question but very important. Give a message to upcoming. Here you need to mention the profession, यहाँ ऐसे करके. तो इस तरह से ये 8 नंबर का क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है. What is the best idea to write interview questions? Just do practice once, twice, thrice. Okay, try to memorize all the questions. You may add your own questions according to profession also. This is I have written here questions for beginners, but you are very good at language, you can frame your own questions also. This is not compulsory, my dear friend, but there are certain things that you need to follow, like introductory questions, like concluding questions, like sequence.
okay, and language. So these are very important things. But apart from that, if you are capable enough to write your own sentences, your own questions, relevant questions, so you can write it down, no doubt. So this is for beginners. Write it down all the questions, try to practice it thrice, twice, and later on you will come to know that कि ये आपका portion हो जाएगा. This is called interview questions. This will ask in examination for 12th standard. Okay. If you have any query, any problem, you can ask me on my personal WhatsApp account 9921237303. तो बहुत इजी वे में ये चीज़ें आपको समझा के यहाँ दी गई है, बस इतना ही ये पोर्शन है. ओके, थैंक यू सो मच.